Assalamu alaikum guys. तो this is our second podcast या slash discussion बोलने हैं। आज फिर से मेरे साथ मेरे अजीज दोस्त और मेहमान मोइस भी है। So welcome Mois, how are you? Thank you. First of all, thank you Wahid bhai for inviting me again. सबसे पहले बिल्कुल ठीक ठाक, बस एग्जाम दे के आया हूँ। तो बस अब आपके साथ डिस्कशन करेंगे क्रिकेट के बारे में। बिल्कुल यार, अब एग्जाम जब मेरे भी होते थे एग्जाम तो उसके साथ यही क्रिकेट ही थी एक या फिर सोर्स ऑफ स्ट्रेस पाकिस्तान के साथ तो होता ही है, तुम्हें पता है, और या फिर सोर्स ऑफ जॉय, बट वो होपफुली अभी स्ट्रेस सोर्स ऑफ जॉय लेवल ही हो। जो स्ट्रेस लेवल होता है वो डबल हो जाता है। एक तो एग्जाम की टेंशन होती है, बाकी क्रिकेट की भी टेंशन लग जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खैर, हमने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते किया था पिछला पॉडकास्ट, काफी कुछ हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं एक महीना गुजर चुका है मुझे क्रिकेट की इतनी दुनिया में, ये वर्ल्ड कप में इतना कुछ हो चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट आई गेस, पीछे चलते हैं फिर से तकरीबन एक हफ्ता ऑलमोस्ट, ये जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ था, और अभी खैर कुछ दिनों पहले। तो व्हाट वर योर बेसिकली फीलिंग्स उस वक्त? मैच जब हम पिछली बार बात की थी तो हमने यही कहा था कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। वो मैच खैर जीत तो नहीं सका, लेकिन व्हाट डिड यू थिंक कि जब टोटल पोस्ट कर लिया था पाकिस्तान ने, वाज इट इनफ? और जो फिर साउथ अफ्रीका ने जिस तरह जब चेस किया, जिस तरह फिर फाइट पाकिस्तान ने। जब उन्होंने फर्स्ट इनिंग जब खत्म हुई थी, पाकिस्तान की बैटिंग जब खत्म हुई है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैच हम डेफिनेटली हारेंगे, क्योंकि इट वाज जस्ट एन ओके टोटल अगेंस्ट दिस साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप। तो जब बैटिंग शुरू हुई, मुझे ये पता था कि स्पिन के खिलाफ कुछ ना कुछ हो जाएगा। साउथ अफ्रीकन हमेशा हम लोग पकड़ लेते हैं उनको, लेकिन हम्म। मैच फिर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया। और जब उसके जो फाइनल ओवर्स थे मैच के, तो इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी कि हम लोग कैसे हारे। वो फिर अब ये भी अभी जाहिर सी बात है, हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि वो आउट था या नहीं आउट था, हारे सिर्फ एग्जैक्टली बुरा। तो एग्जैक्टली इट वाज क्वाइट सैड, लेकिन बॉयज ने अच्छी फाइट बैक की थी, तो डबल मिक्स इमोशंस थे। एग्जैक्टली। आई गेस दैट्स व्हाट वी वांट टू सी एज क्रिकेट फैंस एज वेल, कि आप फाइट करें एटलीस्ट लास्ट बॉल तक, एंड गिव अप नहीं किया। जब वो मेरे ख्याल से मार्करम और दूसरा बंदा है, फॉरगेटिंग हिज नेम, वो जब खेल रहे थे साथ में, मिलर और मार्करम खेल रहे थे, देन इट लुक लाइक कि वो साउथ अफ्रीका विल विन इजीली, लेकिन जिस तरह पे फाइट बैक की है, कम बैक की है, स्पेशली शाहीन के थ्रू, एंड आई थिंक फील्डिंग भी काफी अच्छी थी उस मैच में। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हार्ट ब्रेक तो था, एंड ऑफ कोर्स विल डिस्कस वो बिग टॉकिंग पॉइंट जो था उस मैच का एंड में, उसके बारे में। बट वेयर डू यू थिंक, लाइक अपार्ट फ्रॉम दैट डिसीजन, वेयर डू यू थिंक पाकिस्तान काइंड ऑफ लॉस्ट दैट मैच? डेफिनेटली अगर आप देखा जाए तो हमने 45 ओवर सिर्फ बैटिंग की है। अगर हम हम्म। 2-3 ओवर्स और भी बैटिंग कर लेते, या फिर नवाज थोड़ी देर टिक जाता, तो स्कोर भी 10-20 रन ज़्यादा हो जाते। एंड में सिर्फ आखिरी इट वाज बाय द बेयरेस्ट ऑफ मार्जिन्स कि पाकिस्तान हारा है, तो वो 10-20 रन काफ़ी क्रूशियल हो सकते थे। Yeah. Talking about Nawaz as well, what do you think is going on with him? कि batting में भी उसने like he played like an unnecessary shot उस situation में। completely agree with you कि अगर वो पूरे 50 ओवर खेल लेते, ज़्यादा रन होते बोर्ड पे, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द नेट रन रेट तो है ही खैर, लेकिन साथ में वो 2 पॉइंट्स वैसे ही मिल सकते थे। बट वेयर डू यू थिंक कि ही इज गोइंग रॉन्ग, एंड शुड ही हैव बीन गिवन द बॉल जब उसको ओवर दिया था बाबर ने? और लग भी ऐसा रहा था कि लोग कहते हैं कि बाबर बात नहीं सुनता, लेकिन लग रहा था कि शाहीन, रिजवान, उसने इफ्तिखार ने। मुझे लगता है उसने बात सुनी थी रिजवान और शहीन की, जो डिस्कशन चल रही थी, कि लगता है वो जो हमने टीवी स्क्रीन पे देखा था, तो वो उसने बात सुनी। और इस तरह की सिचुएशंस में उसने नवाज ने नॉर्मली परफॉर्म किया हुआ है। पीएसएल के फाइनल में भी एक दफ़ा मुझे लगता है किया था, उसने डिफेंड किया या था, और काफ़ी दफ़ा उसके पास एक्सपीरियंस है कि वो निकाल लेता है विकेट या फिर कंटेन कर लेता है। तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि अब वो उस वक्त फॉर्म में भी नहीं है ऑब्वियसली। तो या वो वाली वीडियो आ जाती है याद, जब बाबर उसे कहते हैं तुम मेरे मैच विनर हो। तो असल में वो कर सकता था, लेकिन ऑब्वियसली लक उसके साथ इस वक्त नहीं है, तो इसलिए नहीं हो रहा। डू यू थिंक दैट वो ही फिर जो कोहली के साथ हुआ था, कोहली जब बैटिंग कर रहा था, एंड दैट वो फुल
फुल टॉस उसने बॉल कर दी थी या नो बॉल जो भी हुई थी उसमें 17 रन डिफेंड नहीं कर सकता, दैट वाज प्रोबब्ली प्लेइंग ऑन हिज माइंड और नॉट इस टाइम पे ही लुक I टू think मी ही लुक्स definitely, I think definitely it does play a role क्योंकि आप एज ए क्रिकेटर आप पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो उस वक्त इज्जत की बात आ जाती है। और हमने कितनी दफ़ा डिस्कस किया कि हमारे जो प्लेयर्स है वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि वो नहीं स्ट्रांग। तो ऑब्वियसली किसी भी सिचुएशन में इस तरह की इट्स वेरी टफ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ या प्रेशर। और फिर उसके साथ ज़ाहिर सी बात है जो कोहली ने किया था, तो वो एक मेंटल टोल होता है उसका। तो डेफिनेटली वही मसला है था, यस ये कह सो सकते हैं। नो आई एग्री आई गेस उस पे भी एंड आई गेस जो इन्होंने चेंज किया we'll talk about it later as well पाकिस्तान को आगे जाके क्या करना चाहिए बट लेट्स कम टू दैट अंपायरिंग डिसीजन नाउ जो हारिस रऊफ की बॉल पे पैड पे लगा शमसी के अपील की काफी स्ट्रांग अपील की एंड देन वाज गिवन नॉट आउट लाइव में आउट लग रहा था मुझे भी आउट लग रहा था एंड देन अंपायर्स कॉल पे जाके इट वाज बेसिकली क्योंकि उसने नॉट आउट दिया था इट वाज नॉट आउट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट सर एज अ पाकिस्तानी फैन ऑफ कोर्स इट इज़ डिसअपॉइंटिंग लेकिन अगर बात यही कही जाए तो कितनी ज़्यादा एम्पायर डिसीजन हमारे हक में भी जाते हैं। तो या इट्स हिपोक्रिटिकल या अगर मैं इस वक़्त कहूँगा कि एम्पायर्स कॉल की वज़ह से हम लोग हार गए। इट डज़ प्ले अ रोल, इट्स अ बिटर या चैलेंज कि इस वक़्त आप इसको एक्सेप्ट करो, लेकिन या वो जो कॉल थी एम्पायर ने नहीं दी, सो वी जस्ट गॉट एक्सेप्टेड। या अर्लियर इन द मैच एक हमारे लिए गई थी ड्यूसेन वाली जो टू अंपायर्स कॉल पे आउट हो गया था वो बंदा And but I guess my question would be, do you agree with the DRS system as it is, जिस तरह अभी है? Should the umpire's call remain? Yeah, should something else be done about it? आई थिंक इट शुड रिमेन बिकॉज़ अंपायर्स एक इस गेम का क्रिकेट जो गेम है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करती है। तो Mm-hmm. उसका अंपायरिंग होना ज़रूरी है, अंपायर्स कॉल भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अंपायर नहीं होगा और अंपायर कॉल नहीं देता, जैसे फॉर इंस्टेंस वो कहते हैं नॉट आउट है, जबकि आउट है, तो वो Mm. क्लिप कर रहा है अगर बॉल, तो फिर भी वो नॉट आउट होगा। तो Yeah, आप उस तरह का फैक्टर आप कंपायरिंग का आप नहीं निकाल सकते मैच में। सो आई थिंक इट शुड एग्जिस्ट डीआरएस सिस्टम द वे एज इट इज नाउ, इट्स ओके। ये मुझे याद है लास्ट लास्ट ईयर इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का टूर था, और mm, नासिर हुसैन ने बहुत एक प्यारी वीडियो भी बनाई थी इसके बारे में। उसका पूरा एनालिसिस था कि अगर आप अंपायर्स कॉल को आप देना आउट देने लग जाओगे, तो बेसिकली यू आर प्लेइंग विद द फोर्थ थंब एंड फिफ्थ थंब। yeah. You get the point? I remember that ये call. वो मार्जिन ऑफ Yeah. एरर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो या फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू अंपायर्स कॉल होना चाहिए। Okay. I would like to challenge you on that कि अगर आप टेनिस में भी देखो that technology is used for ये हॉकी वाली टेक्नोलॉजी होती है and उसमें there is no such thing as umpire's call. बट उसमें भी बट आई गेस उसमें शायद टू टिप्पा वाली चीज़ें नहीं है टेनिस में सिर्फ वन टिप्पे वाली चीज़ है बट उसमें लाइक इवन इफ अ पार्ट ऑफ द बॉल उस पे अगर दिखा रहा है कि इट्स ऑन द लाइन या देन इट सेज ऑन द I completely get कि yes there's a margin of error not 100% it's 99 point जितने भी परसेंट है 99% accuracy है and नासिर हुसैन वाली बात भी yes he demonstrated कि probably maybe it's missing or like it's hitting the fourth stump or whatever. But do you think that if you say okay, you make it simple, as long as it's hitting the stumps, it is out. And uh, in today's era, जहाँ पे बैटिंग is like batsmen are favored, पिचेस हो गई, रूल्स हो गए, whatever. एंड अभी हम वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं कि कितने 350 प्लस स्कोर्स हो चुके हैं. Don't you think it would kind of bring a bit of balance between bat and ball as well? I guess potentially if you change that rule, umpires are naturally going to give more things out.
But then it will be clear cut. If it's hitting the stumps, it's out. If it's not hitting, then it's not out. या दैट इज़ अ गुड पॉइंट। वैसे ये आपने जो इस वक़्त बात की काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी असल में आप उस तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। डेफ़िनेटली 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इस वक़्त, लेकिन Yeah, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी वैलिड है और दूसरा जो मैंने जो मेरी ओपिनियन जिस पे बेस्ड है वो नासिर हुसैन के वो जो वीडियो थी जिसमें उसने डेमोन्स्ट्रेट किया था उसके बारे में उसके बाद असल में मैंने फ़ॉर्म की है। तो बोथ ऑफ देम एक्चुअली या इट्स जस्ट आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि दोनों ओपिनियंस असल में मैटर करती हैं। सो इट विल ऑलवेज बी दिस काइंड ऑफ डिलेमा कि किस तरफ जाएगी क्रिकेट, आईसीसी किस वक्त किधर लेके जाता है इसको। yeah. No, I guess yes. Until technology is 100%, this debate will continue. जब तक इस तरह crunch situations में अगर आपका basically अगर हम ये भी सोच लें कि डीआरएस ना भी होता, if umpire had not given out, आप क्या कर सकते थे? He could not have done एग्जैक्टली anything. एग्जैक्टली तो फिर वो बात ही खत्म हो जाती है कि इफ्स एंड बट्स, और वो भी फिर मैच इस तरह का जिसमें आपको 2 पॉइंट चाहिए हो। तो फिर ये तो फिर हम इतनी ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हुए मोहाली 2011 जब सचिन तेंदुलकर आउट हुआ था उसके बारे में फिर हम रोने लग सकते हैं। तो वो इस तरह तो फिर बहुत ज्यादा केसेस है। Exactly. No, exactly. But do you think just to point पे like there's a need to bring better balance between bat and ball? अगर DRS के through नहीं, should it be done some other way? उस दिन Waqar Yunus I think was saying or suggesting जब ये वसीम वो कर रहा था reverse swing बांग्लादेश के खिलाफ, we'll come to that match as well, लेकिन कि उसमें भी they were discussing कि okay maybe until 20th over play with the two new balls, फिर उसमें से जो है आप you just keep one of them to give the chance to reverse swing वगैरह. या Do you दैट्स think एक्चुअली something गुड। like that? अगर ये इस तरह का कोई इम्प्लीमेंट हो सकता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट में वो बैलेंस नहीं रहा बिटवीन बैटिंग एंड Mhm. बैटिंग एंड बॉलिंग। तो ये इस तरह का रूल है जो बॉलर्स को भी काफ़ी हेल्पफुल लगेगा और वो उससे कंफर्टेबल फील करेंगे और देयर शुड बी एन इक्वल चांस फॉर बोथ ऑफ द प्लेयर्स। सो बोथ ऑफ द टीम्स हु आर आइदर बॉलिंग और बैटिंग, तो वो फिर दोनों के लिए डेफिनेटली या बैट्समैन के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन बॉलिंग टीम के लिए फिर अच्छा है। लेकिन जो बैटिंग टीम Yeah, होगी वो भी फिर बॉलिंग करेगी, तो इट्स एक्चुअली अ फेयर गेम फॉर ऑल देन आई गेस। yeah, great. चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक लेट्स डिस्कस आज का जो मैच हुआ है इंडिया श्रीलंका का. इंडिया डेफिनेटली दे लुक लाइक द फेवरेट्स, डोंट दे? डेफिनेटली इट्स देयर होम ग्राउंड, क्राउड इतनी ज़्यादा है और टीम इस वक़्त उनकी बहुत अच्छी है। बैटिंग मुझे लगता है बॉलिंग से इस वक़्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दे आर लुकिंग एब्सोल्यूटली फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। You think bowling is stronger than their batting right now? या इट इज़। Okay, like overall या उनके पेस अटैक या मुझे लगता है ओवरऑल उनकी जो बॉलिंग है इस वक़्त काफ़ी अच्छी है। अगर आप उनके स्पिनर्स टॉप नॉच है, उनकी पेस बॉलिंग जिस तरह वो बॉलिंग करा रहे हैं इस वक़्त, इट्स एब्सोल्यूटली मेस्मराइजिंग। आप उनकी बॉलिंग देख रहे होते हो तो सोचते हो यार पाकिस्तान कभी इस तरह की बॉलिंग करता था। या एग्जैक्टली जब शाहीन ऊपर से विकेट निकालता था और नसीम था वगैरह. या नो दे एग्ज़ैक्टली। और आज मैं वो वीडियो भी देख रहा था कि जिसमें वसीम अकरम ने कहा है कि बुमराह न्यू बॉल मेरे से ज़्यादा बेहतर कराता है। लाइक हाँ नहीं बुमराह का डेफिनेटली कंट्रोल है एंड आई थिंक हिज बॉलिंग न्यू बॉल भी क्या हो तो ओल्ड बॉल से मिडिल में भी आके विकेटें ही इज लाइक टेकिंग I think the विकेट्स एंड underrated star is Vikat Shami hai. The way he's या bowling, it's absolutely amazing to see him bowl जिस तरह की उसकी वो बैट्समैन को इस वक्त सच्ची में चार है अपनी बॉल से। या एग्जैक्टली एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो उसको पहले क्यों नहीं खिला रहे थे. लाइक व्हाई वुड यू प्ले ठाकुर व्हेन यू हैव बॉलर लाइक Shami या basically. एक्चुअली या मुझे लगता है उन्होंने उसका प्राइम असल में वेस्ट कर दिया है। Yeah, I agree. I agree उसमें. और अब I don't know what they will do अब जब पांड्या फिट होगा.
I don't know if he'll be fit for the next match or not, but I guess it's a good dilemma to have if you're an Indian fan, yeah, basically if you're India. So no, Yeah, definitely they're good. South Africa, I guess, is also looking um, promising as well. And दोनों में favorites हैं वो दोनों काफी favorites हैं. What do you think happened with England in this World Cup? एशियन जो कंडीशंस है उनको सूट नहीं की. जो बेस्ट बॉल जो क्रिकेट वो खेलते हैं वो Yeah. फ्लैट ट्रैक्स पे तो अच्छी है, लेकिन आप कह सकते हो इंडियन ट्रैक्स पे भी फ्लैट ट्रैक्स होते हैं, लेकिन फिर भी स्पिनिंग बॉलिंग में उसका फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंडियन पिचेस पे. तो इंग्लैंड की पिचेस इस वक्त बिल्कुल फ्लैट थी. वो देवर असल में बुलिश, ऑल ऑफ देम वर बुलिश. तो Yeah. अब वो एक्सपोज हो रहे हैं. Mm-hmm. और Yeah. फिर I guess nobody expected them to perform like that. With on Morgan, he said something like, if somebody said to me on the way to India, okay, England would be like only winning one game and would be like at the bottom of the table, he'd be like, "Are you smoking or something?" And नहीं, वैसे but like, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंग्लैंड की इतनी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस. दे वर वर्ल्ड कप विनर्स लास्ट टाइम. ठीक है उनकी जो भी कंडीशन थी, बट दे परफॉर्म्ड ओवरऑल वेल इन द टूर्नामेंट. और दे हैव बीन डूइंग ओके. सो दिस काइंड ऑफ एन परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप इट्स एक्चुअली क्वाइट शॉकिंग. yeah, yeah, and defending champions के साथ वो भी रहते थे. But I guess now they are probably gonna be more dangerous. They have nothing to lose, quote unquote. They have a spot in Champions Trophy to lose, लेकिन otherwise nothing to lose. So I guess पाकिस्तान के लिए भी that is probably dangerous क्योंकि दूसरी जो आखिरी जो गेम है पाकिस्तान की वो इंग्लैंड के साथ है. या वो एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल भी हो सकता है हमारे लिए. तो Yeah. डेफिनेटली हम लोगों को उनको इजी लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बैटिंग अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. अगर आपको फ्लैट पिच मिल जाती है उन्होंने काफ़ी मुश्किल हो सकता है जिस तरह की हमारी बॉलिंग इस वक्त चल रही है. तो Mhm. बैटिंग उनकी इतनी मुझे लगता है एशियन कंडीशंस में स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास फिर कोई स्पिनर्स ही नहीं है. कोई अच्छे स्पिनर्स ही नहीं है जो उसको बिल्कुल यूटिलाइज कर सकती है उस गैप को. लेकिन ओवरऑल आई थिंक इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट फॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंग्लैंड. Yeah. खैर उससे पहले तो we have to I guess win against New Zealand and that match अब सिनेरियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड वाला जो मैच हुआ था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मैच? उसके बाद क्या इमोशंस क्या थे? एंड आई गेस वी वर होपिंग कि साउथ अफ्रीका विल डिफीट न्यूजीलैंड, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से आई गेस वी डिडंट एक्सपेक्ट. मुझे लगता है कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये होगा. ऑनेस्टली कुदरत का निज़ाम जैसे शक्ल से क़ैद मुश्ताक कहते हैं. वही है, क्योंकि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका में. 258 रन से मुझे लगता है जीते वो लोग, इस तरह कुछ था. 190 समथिंग रन से. हाँ या हाँ सॉरी, 198. तो 190 समथिंग रन. लेकिन कोई भी एग्जैक्टली. एक्सपेक्ट नहीं करता कि न्यूजीलैंड को इतनी मार पड़ेगी. उन्होंने इतना मारा है. इट वाज एग्जैक्टली. अनबिलीवेबल. Like they have been, I think, they have hit so far the most sixes in the World Cup. और I think वेस्ट इंडीज ने रिकॉर्ड किया हुआ शायद 96 का, और साउथ अफ्रीका हैज ऑलरेडी हिट लाइक 70 प्लस. या सो और अभी लास्ट मैच में उन्होंने 20 ओवर्स डॉट बॉल्स खेले थे और फिर भी उन्होंने 358 बनाए ओनली बिकॉज ऑफ दी सक्सेस. इट्स एग्जैक्टली एब्सोल्युटली एग्जैक्टली मेंटल. ये पावर इट इज. गेम इनके पास बहुत जबरदस्त आई है. एंड इट्स अ गुड चेंज टू सी इन द साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप, क्योंकि ऑब्वियसली उनका क्राइसिस भी चल रहा था कुछ साल पहले, तो इन्होंने काफी अच्छी प्रोग्रेस की है. Yeah, I guess now they have to basically get rid of that joker stack. They kind of did that versus Pakistan a bit. लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क है उनकी चेसिंग एबिलिटी पे इवन नाउ, एंड देखते हैं व्हाट हैपेंस नाउ. बट लेट्स काइंड ऑफ टॉक अबाउट ओके पाकिस्तान. अब जो अगला मैच है सैटरडे को अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हाउ डज पाकिस्तान प्रिपेयर फॉर दैट?
what do you think should be the playing 11? आपको कहीं holes नजर आ रहे हैं right now जो पिछली playing 11 थी उसमें? Hmm, I think we should go with our strongest hold, जो पेस बॉलिंग है, and play four pacers और हसन को आप हम्म। लेकर आओ नवाज की जगह, क्योंकि नवाज असल में इस वक्त परफॉर्म इतना नहीं कर रहा, उसने मुझे लगता है इतने ओवर्स भी नहीं कराए थे फिर लास्ट मैच में, तो बेसिकली ही इज लास्ट जस्ट मैच यूजिंग में स्पॉट। आगा सलमान खेल रहा था नवाज की जगह। हाँ जी, इस तरह, अच्छा अच्छा, हाँ। And he can- तो आप उसको उसकी जगह लेकर आ सकते हैं, या फिर या इट्स एक्चुअली क्वाइट टफ। फखर के आने से हमारी टॉप थ्री फिर से सॉलिड लग रही है। So Mhm. the team, how it is right now, it was fine. Only change I would make is swap Agas Khan for Hassan Ali, and then we're good to go. So you would keep Osama Mir basically in the team as kind of the main spinner Yeah, we don't have any other option. option. Yeah, अगर शदाब फिट I would. होता है तो शदाब Yeah, को आप लेकर आ Shadab. सकते हो अंदर, लेकिन मुझे लगता है शदाब फिट नहीं है, तो फिर ऐसे ही। I haven't heard from it. Like उसको concussion, but I don't know how long it takes to recover. But no, I agree. Shadab is kind of the X factor like Fakhr. Um, Personally, I was also debating can you keep Agha Salman and Iftikhar, or do you bring? I would personally bring Hassan instead of Osama, and then Shadab if he's fit, instead of Agha Salman. If not, then you keep Agha Salman, I guess. या Uh, एग्जैक्टली वो असल में आगा सलमान की स्पॉट भी इस वक्त यूजलेस थी, क्योंकि ना yeah, he उसने can do anything. बैटिंग करनी है, टू बी ऑनेस्ट, ना उसने बॉलिंग करनी है, वो बस टीम में आ गया एज अ गैप फिलर। तो उससे बेहतर Yeah, है कि आप शदाब को ले आओ वापस अगर वो फिट है, और फिर हसन अली को भी ले आओ उसामा मीर की जगह, क्योंकि उसामा yeah, मीर भी डिसअपॉइंटिंग रहा है, तो आपकी 11 भी अच्छी है। लेकिन yeah. टू बी ऑनेस्ट आई सी इट हैपनिंग बट स्टिल नॉट सी इट हैपनिंग, वो वही है वो, आप कुछ पता नहीं कह नहीं देखना सकते। क्या होगा. Exactly. No, because where we are seeing is कि इफ्तिखार से अच्छा वो न्यू बॉल करा रहे हैं along with Shaheen because they don't really have any other option. Rauf is ना, not that good with new ball. Wasim is not that good with new ball. And can you really go with Iftikhar against New Zealand with the new ball? Yeah, I don't think so. So you have to, I guess, bring Hassan in. Somehow you have to bring him in, and like if you're definitely missing that all-rounder element जो आपको चाहिए. I think in the playing 11. So या now they have असल to में try हम, and find it. मुझे लगता है मोहम्मद हफीज को मिस कर रहे हैं। Exactly, Mohammad Faiz को चाहिए. उसकी हम ऑफ स्पिन बॉलिंग को मिस कर रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि अक्सर वो Exactly. Yeah, he नॉन was. टीम्स के खिलाफ ओपन भी करता था बॉल, तो या Exactly. खैर टॉकिंग अबाउट आगा सलमान बाबर की कैप्टनसी पे भी टच कर लेते हैं कि ही प्लेड आगा सलमान वही बात आती है लेकिन बट व्हाई डिड ही प्ले हिम इफ ही प्लेड हिम इंस्टेड ऑफ नवाज वाज ही प्लेइंग एज अ बॉलर और वाज ही प्लेइंग एज अ बैट्समैन was he playing as an all-rounder if he was playing as an all-rounder why did he not give him any overs to bowl हालांकि उसामा भी उस टाइम पे he was just not yeah, he wasn't bowling very good he was bowling okay Iftikhar was bowling good तो उसके overs बनते थे I guess but could he have tried Salman and I guess this is a recurrent theme as well कि जिस मैच में वो इफ्तिखार से बॉलिंग कराता है आगाज से नहीं कराता है जिस मैच में आगाज से कराता है उस मैच में इफ्तिखार से नहीं कराता. या ये बात मैंने भी नोटिस की है कि देयर इज ऑलवेज दिस स्लाइट कंफ्यूजन कि कौन बॉलिंग करेगा, और जब एक बंदे को बॉल मिल जाती है दूसरे को बॉल नहीं मिलती, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, और मैनेजमेंट को और बाबर को खुद सोचना चाहिए कि इस तरह की, या अगर मैं कैप्टन हूँ मैं डेफिनेटली अपनी दोनों ऑप्शंस को यूज करूँ, लेकिन वो एक एक को यूज करता है फिर वो सोचता है कि एक ही को यूज करना है, तो देयर इज दिस स्लाइट कंफ्यूजन के हो क्या रहा है। Yeah. And overall, what do you think about his captaincy? उस पे काफी criticism भी हुआ है कि he often gets defensive too early. And जब भी आपके पास मौका होता है to like really pounce on the opposition to kill the game, he doesn't really go for the kill. Do you think that's fair? इट इज फेयर, बाबर के बारे क्योंकि में?
साउथ अफ्रीका के मैच में नहीं, या फिर लास्ट मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में द बॉल वाज बांग्लादेश रिवर्सिंग। में। हाँ जी, बांग्लादेश के मैच में द बॉल वाज रिवर्सिंग, तो दे वर लाइक 145 फॉर 7 आउट, और या आप फिर भी ले आते हो इफ्तिखार को, बॉल लेते हो, अपने पेसर्स को लेकर आओ, मैच जल्दी खत्म करो, उनकी इनिंग्स खत्म कराओ। लेकिन या यार वो लेके नहीं आता। तो उसका ये डिफेंसिव है, वो एक ही, वो उसने जो प्लान बनाया तो उसके मुताबिक ही चलता है, विच इज समटाइम्स वेरी गुड, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू इम्प्रोवाइज, तो वो उस बाद में या लैग करता है। Do you think he's, often thinking about 50 overs? Apart from वो South Africa वाले match में, of course, I think उधर he showed a bit of kind of adaptability. He knew that he had to bring pacers and finish them out. लेकिन again Bangladesh वाले match में भी you could see that he was thinking about 50 overs. जबकि to your point, he could have brought pacers back and thought about it like as a 40 overs game, yeah, instead of एग्जैक्टली, 50 overs इट्स game. नॉट ओनली 40 ओवर्स गेम के, वो नेट रन रेट पे हम उससे भी ज्यादा तेज, ज्यादा हिट ले सकते थे। अगर उस वक्त आप 160 170 पे उनको ऑल आउट कर देते हो, तो द गेम वाज इन योर बैग, एंड आल्सो द नेट रन रेट वाज इन योर बैग, सो Yeah, ये काफी डिसाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर वही बात आज थी अवेयरनेस की, कि मैच गेम अवेयरनेस नहीं होता, या कोचिंग टीम नहीं देती, या फिर प्लेयर्स को खुद नहीं है, बट yeah, ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स प्ले अ रोल, और खासकर जब आपका लास्ट वर्ल्ड कप में आप नेट रन रेट पे निकले हो, तो आपको ये बात सोचनी चाहिए। yeah, exactly. And on that topic of captaincy, तो अभी rumors भी चल रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद, you know, I guess most probably if Pakistan doesn't do well in the World Cup, uh, but rumors ये चल रहे हैं कि हो सकता है सरफराज को टेस्ट कैप्टनसी दे दी जाए, and maybe Shaheen might be made the white ball captain, या Rizwan might be the white ball captain. So, what are your thoughts on that? Should a captaincy change occur after the World Cup? And if so, then किसको मिलनी चाहिए? ये काफी डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि अगर मैं ऑप्शंस को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ बाबर ही ठीक है, और फिर जब मैं बाबर हम्म, को देखता हूँ तो सोचता हूँ कोई डिफरेंट कैप्टन होना चाहिए। तो इट्स डिलेमा कि कौन ज्यादा वर्ष है, तो फिर मैं अगर देखूं तो फिर बाबर ही ठीक है। अगर okay, सरफराज को वापस लेकर आ रहे हैं फॉर टेस्ट कैप्टनसी, सरफराज खुद ही वाज अ गुड प्लेयर, लेकिन अब उसकी रिटायरमेंट की एज है। yeah, वो एक स्पॉट भी लेगा किसी यंगस्टर की, या फिर वो mm, कितनी देर चलेगा, इट्स नॉट फॉर, इट्स अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। yeah, और फिर yeah, वाइट yeah, बॉल no, में आप कह सकते हो कि अगर ठीक है, अगर बाबर इस वक्त नहीं परफॉर्म करता, तो आप शाहीन को ग्रूम कर सकते हो। रिजवान भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा। आप शाहीन को T20 की कैप्टनसी दे दो, बाकी ODI और टेस्ट की आप बाबर को दे दो, तो इस तरह एक गुड बैलेंस मैच भी हो जाएगा, और कैप्टनसी का जो बर्डन होता है बाबर से भी थोड़ा सा लाइट होगा, but और शाहीन भी ग्रूम करेगा। don't you think it's too early to give it to Shaheen? हालांकि 2 titles वो जीत चुका है अभी तक PSL में as captain, नो सर, but उसके अंदर एक फाइटिंग एबिलिटी है, शाहीन के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है। वो तो अब मैं लाहौर कलंदर्स का फैन होके जरूरी कहूंगा, लेकिन वो बात फिर से आती है कि पाकिस्तान असल में क्रिकेट में जनरली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है फास्ट बॉलिंग कैप्टन्स ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है जब वो कैप्टनसी लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता। एक बैट्समैन होता है, उसके अंदर कैप्टनसी भी उसने सोचनी होती है, उसने अपनी परफॉर्मेंस भी देखनी होती है, क्योंकि बैटिंग इज, टू बी ऑनेस्ट, मोर डिफिकल्ट देन बॉलिंग। तो फिर भी yeah, या तो मैं शाहीन को डेफिनेटली आई थिंक वी शुड ग्रूम हिम, और बाबर को अभी दो आप, फिर भी चांस दो। टेस्ट में आप उसको रख लो, और ODI में रख लो, T20 का उसका कैप्टनसी का जो बर्डन है वो थोड़ा सा खत्म कर लो। सो आई थिंक yeah. दैट्स द वे टू गो। Okay, so you would say Shaheen and then Babar को आप उसमें रखें टेस्ट में और ODI में, and या even after like अगर वर्ल्ड कप में अल्लाह ना करे like Pakistan doesn't reach semis या doesn't go further,
So even then, you would keep Babar still in ODIs, and Shaheen you would make the T20 captain या फॉर द टाइम बीइंग यस, क्योंकि हमारी for the कोई time. ऑप्शंस नहीं है कोई और। Mm-hmm. रिजवान को आप दे सकते हो, लेकिन फिर वो मसला रिजवान हमारा एक क्रूशियल प्लेयर है, अगर उस वो कैप्टनसी कैसे संभालेगा पाकिस्तान टीम की, इवन दो Yeah, ही हैज मैनेज्ड क्वाइट वेल इन बाय yeah, कैप्टनिंग मुल्तान सुल्तान, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट फिर भी डिफरेंट हो जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट yeah. से, प्रेशर ज़्यादा है। तो रिजवान, I don't think he should be burdened by the load of captaincy. बाबर को आप Mm-hmm. कैप्टन अभी बनाए रखो, क्योंकि वो आपका सॉलिड प्लेयर तो है, आपका स्टार प्लेयर तो बाबर ही है। तो गिव हिम सम Yeah, टाइम, ही इज स्टिल यंग, मे बी ही वुड इम्प्रूव। लेकिन yeah. या फिर वही बात आ जाती है, 2-3 इयर्स तो वही कैप्टन है, तो इम्प्रूवमेंट वही हमने कैप्टन कोई है, तो हाँ. देखी नहीं है। लेकिन ऑप्शंस नहीं है Exactly. ना, ऑप्शंस Yeah. नहीं है। I mean, I guess my reservation के शाहीन को अगर आप, I completely agree that he is probably the future captain of Pakistan. My reservation is I feel that हालांकि he has won 2 titles with Lahore Qalandars, he has that fighting spirit as you mentioned, और lead from the front भी करता है वो, and like he doesn't back down from kind of those pressure situations. But जिस तरह का हमारा बोर्ड है पीसीबी, लाइक पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड ही बोल सकते हैं उसे, जिस तरह का बोर्ड है, लाइक वुड दे बी पेशेंट विद सच अ यंग प्लेयर अगर रिजल्ट्स नहीं आते फॉरन. अगर हम देखें अदर यंग कैप्टन्स, ग्राहम स्मिथ का एग्जांपल है, दे लाइक groomed him and really he was one of the most successful of South Africa. But they stuck with him. They stuck, gave him full chance, full patience. Do you think that's possible with a board like Pakistan? हालांकि जब during the World Cup, in the midst of the World Cup, chief selector resign कर चुका है because of, I don't know, some controversy या conflict of interest वगैरह. या वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब कोई नया कैप्टन बनता है और उसकी परफॉर्मेंस इतनी सही नहीं होती, सारा ब्लेम उसी के ऊपर जाता है, चाहे वो कैप्टनसी उसने खुद सही की हो। तो विद अ बोर्ड लाइक पीसीबी, इट्स इम्पॉसिबल टू गिव अ यंग प्लेयर हु माइट नॉट डू वेल लॉन्ग रोप, लेकिन कभी ना कभी तो उसको कैप्टनसी देनी है, क्योंकि वी नहीं, नो कि फ्यूचर कैप्टन तो वही है। तो हम उस बात से yeah, अगर हम डरने लग जाए कि शाहीन माइट नॉट डू वेल और पीसीबी फिर उसे ज़्यादा बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देगा, तो yeah, या वही बात आ जाती है कि ऑप्शंस नहीं है, और फिर जब हम करेंगे तो फिर फुल सपोर्ट देनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं मिलेगी, जो सीधी सी बात है। yeah. खैर, टॉकिंग अबाउट अभी बाबर के बारे में बात कर रहे थे, एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं लाइक सोशल मीडिया पे भी, एंड इवन मेरे जानने वालों में भी हैं, who actually complain quite a lot about Babar, and they say ke, like, a lot of people say ke he's the best player, but then these people, they say ke, okay, he hasn't really done anything of note. Why is he such, you know hyped so much, और उसे क्यों बोलते हैं कि बेस्ट प्लेयर है वगैरह. Do you think that's fair, uh, or do you think it's, over criticism? आई थिंक इट इज़ फेयर, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास, आपकी टीम के पास किस तरह का प्लेयर है और वो कौन-सी परफ़ॉर्मेंस दे सकता है, और अगर हम रियलिस्टिकली देखें, तो बाबर कभी क्रंच सिचुएशंस में उसने इतना ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं किया। ओनली सेंचुरी व्हाट आई कैन रिमेंबर इज़ द वन इन द लास्ट वर्ल्ड कप वर्सेस न्यूज़ीलैंड। जो 100 उसने की थी वो काफ़ी क्रूशियल थी, या फिर मैं अगर क्रूशियल इनिंग्स की बात करूँ, मुझे इतना याद नहीं आता, कोई इतनी मेमोरेबल नॉक्स नहीं है या फिर इनिंग्स नहीं है। ओके, ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही प्लेज़ द कवर ड्राइव वेरी वेल, और एज़ अ बैट्समैन उसकी टेक्नीक बहुत अच्छी है, वो रन्स बनाता है, टेक हमेशा कोशिश करता है अपना बेस्ट देने का, लेकिन अ, प्री कैप्टेंसी बाबर वाज़ अ डिफरेंट बीस्ट, और पोस्ट Yeah. कैप्टेंसी बाबर एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी है और एक डिफरेंट ही बैट्समैन है, जो कि थोड़ा डर के खेलता है और Mm-hmm. सोच समझ के खेलता है। वो वही फिर आ Yeah. जाती है बात कैप्टेंसी वाली, कि वो उसे थोड़ा-सा वहाँ पे भी Pressure.
कर रहा है, प्रेशर में है वो। या या हालांकि इसके अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ऑफ कोर्स नॉट इन बिग टूर्नामेंट्स, लेकिन बायलैटरल्स में ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एज कैप्टन एज वेल। एंड आई डोंट नो वर्ल्ड कप में आके क्या होता है, एंड आई गेस आई कंप्लीटली एग्री विद यू एज वेल कि फेयर है क्रिटिसिज्म, बिकॉज जिस कैलिबर का प्लेयर है, and we are seeing like all of these other players scoring centuries, and you're like frustrated कि why can't our best players score centuries, um, like the other people are doing, and पाकिस्तान टीम पे काफी डिपेंड करती है बाबर के ऊपर। तो what do you think is now the way forward? अभी ये जो दो remaining games है पाकिस्तान की, न्यूजीलैंड and versus England, both will be tough games. How do you think they should approach it? Uh, this game too, should they think about like other games as well, क्योंकि permutations को भी आना होगा बीच में, चांस भी है बारिश का on Saturday. What do should they really think about? द मेन गोल शुड बी कि आप रिमेनिंग मैचेस जीतो, जो भी होता है। अगर आप सेमीफाइनल्स पहुंचते हो या फिर नहीं पहुंचते, वो उनको सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो उनकी इस वक्त बस में बात नहीं है। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, और इफ यू मेक द सेमीफाइनल्स, इट्स अ बोनस। और फिर Yeah, कुछ भी हो सकता है उसके बाद, फिर वो जज्बा जुनून वापस भी आ जाएगा टीम के अंदर। लेकिन इस वक्त गेम बाय गेम लें, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता कि क्या होगा वर्ल्ड कप में। आप न्यूजीलैंड से भी आ सकते हो। इट्स yeah, आई थिंक exactly. इट विल बी एन अपसेट अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है, रियलिस्टिकली Yeah, स्पीकिंग इस वक्त। तो इट विल बी एन अपसेट। और yeah. इंग्लैंड को मोस्ट प्रॉब्ली हम हराएंगे, वो तो बात पक्की है। मुझे लगता है वो हम हमारे पास उनकी अच्छा, चाबी है। हमारे पास उनकी चाबी है। लेकिन गेम बाय गेम अगर आप देखें, तो अभी बॉयज को इतना प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए, और सोचना भी नहीं चाहिए कि वो सेमीफाइनल बना रही है। अगर ये प्रेशर लेंगे तो फिर से वही परफॉर्मेंस देंगे जो हमने शुरू में देखी है वर्ल्ड कप में। yeah. ना आई थिंक एज वेल कि अभी अगर आप ग्राफ देखें दोनों टीम का, पाकिस्तान न्यूजीलैंड, तो पाकिस्तान इज स्टार्टिंग टू क्रीप बैक अप, और फखर के आने के बाद आई थिंक देयर इज दैट पॉजिटिव मूड अगेन। और न्यूजीलैंड का अदर तरफ देखें, 3 गेम्स इन अ रो लूज कर चुके हैं, एंड दे आर आल्सो हैविंग इंजरी स्केयर्स वगैरह। आई थिंक पिछले मैच में एक पॉइंट पे ये भी बात आ गई थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, दे माइट नॉट हैव इनफ फील्डर्स, even in the reserves to basically come out and field. तो even I think New Zealand wali game may be, I wouldn't say Pakistan has the advantage, because I think you're right, New Zealand is still a very good side. But I do think that there is maybe some kind of balance in that regard. And I completely agree with you कि it's all about clarity now, कि आपने ये नहीं सोचना कि बाकी टीमों का क्या होगा वगैरह, you just try and यू go जस्ट डू योर for the जॉब। game. अगर आप अपने 2 मैचेस जीत जाते हो, आपने कोशिश की है, इफ यू मेक द सेमीज देन इट विल बी फाइन। इफ यू डोंट, ओके, इट वाजंट मेंट टू बी। जस्ट Yeah, लाइक द लास्ट वर्ल्ड कप, नेट रन रेट पे फिर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन exactly. या डेफिनेटली वो जो इंजरीज की आपने जो बात की न्यूजीलैंड की टीम में जो है, उससे चांसेस और डेफिनेटली बढ़ेंगे, क्योंकि उनके की प्लेयर्स नहीं है। और Yeah, इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड की टीम जो शुरू में थी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिप कर रही है। तो yeah, पाकिस्तान, एज यू सेड, इट्स स्टार्टिंग टू क्रीप। तो yeah, टू बी, आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों exactly. टीम्स अनप्रेडिक्टेबल इस वक्त। Exactly. पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग भी परफॉर्म कर Well, सकता है। और न्यूजीलैंड की हाँ, भी यही बात है। सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल टू से कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन यू वुड होप कि पाकिस्तान जीते, और yeah. लेकिन इतनी इस वक्त हाई होप्स नहीं रखनी चाहिए। मैं लास्ट में जब वो साउथ अफ्रीका का मैच है ना, मैंने लास्ट टाइम कहा था पाकिस्तान विल बीट एंड कम बैक विद अ बैंग। वो आखिरी ओवर में बैंग खत्म हो गया था, तो अब मैं कुछ नहीं कहूंगा इस तरह की बात। No, you're right. Expectation ही अगर आप low रखेंगे, then you won't be लो disappointed. लो एक्सपेक्टेशंस रखी अपनी टीम से। मैंने तो यही सीखा है। Exactly. And I guess पाकिस्तान के पास advantage ये भी है कि they, I think group stages में they have the second last game. So न्यूजीलैंड सारे मैचेस खेल चुका होगा तब तक, and अफगानिस्तान का भी पता चल चुका होगा, and
like situation would be clear okay, what exactly needs to be done Yeah, uh, in that game. And talking about Afghanistan, actually, do you think they have a chance to qualify in semifinals? Yeah, you think they won't be able to beat New Zealand and Australia? आई थिंक दे कैन डेफिनेटली बीट ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड को भी अच्छा, वो कर सकते हैं क्योंकि न्यूजीलैंड में काफ़ी ज़्यादा अब इंजरीज हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मुझे थोड़ी सी स्पिन के खिलाफ वीक लगती है, उनके स्पिनर्स अफगानिस्तान के बहुत टॉप नॉच के हैं। तो mm, इट्स गोना बी अ फेयर कॉन्टेस्ट स्पेशली ऑन दीज पिचेस। और uh-huh, अगर वो बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग करते हैं अफगानिस्तान फॉर इंस्टेंस 200 230 पे ऑल आउट कर देते हैं दोनों टीमों को, तो वो जीत भी जाएंगे। तो उनका yeah. चांस भी काफ़ी ज़्यादा है Sorry, सेमीफाइनल्स sorry, में not आने का। South Africa के against, I think, yeah, हम्म, Afghanistan right match. But yeah, या you're सो right. इट्स गोना बी इत असल में ये वर्ल्ड कप काफ़ी स्टार्ट ऐसे बोरिंग हुआ था, लेकिन अब नाउ द वे इट इज मार्चिंग टुवर्ड्स इट्स एंड, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है असल में। कोई भी टीम अब असल में आज इंडिया ने क्वालिफाई किया है फॉर द सेमीज, Yeah, लेकिन इस वक्त इट्स स्टिल ओपन। exactly. अभी I think theoretically England के पास भी chance है to qualify still. एग्जैक्टली And और वो उनकी परफॉर्मेंस इस वक्त तो बिल्कुल ही या exactly. And Netherlands के पास भी chance है फिलहाल. But I guess it's mostly gonna be between New Zealand, Pakistan, and Afghanistan के who is kind of gonna come out on top या इस regard में. Um, but खैर, let's regardless of whatever happens in the World Cup now, final baat which I would like to do with you now is like what would be the way forward for basically Pakistan, ahead of this World Cup? How do they prepare for the next 4 years? आई थिंक हमें यंग टैलेंट को असल में चांस देना चाहिए, लेकिन यंग टैलेंट अगर हम देखें तो बैटिंग में आते हैं। बैटिंग हमारी इस वक्त काफ़ी सेट है, बॉलिंग भी Mm, स्पिनर्स के लिए आप जाहिर सी बात है कह सकते हो कि स्पिनर्स हमें कोई अच्छे ढूंढने चाहिए। फ्रॉम टॉप ऑफ माय हेड फैसल अकरम एक इस तरह का बॉलर है, उसको हम ग्रूम कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। Shams, और लेफ्ट आर्म चाइना मैन है कुलदीप यादव जैसा, तो yeah, उसको आप ग्रूम कर सकते हो। फिर आप लाइक्स ऑफ सैम अयूब, मोहम्मद हारिस को आप टीम के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जो एक हाई टेम्पो पे खेलते हैं, एलिगेंट बैट्समैन है और वो एक्स फैक्टर yeah, भी लेकर आते हैं। अम, yeah, लेकिन फिर आप वही बात आ जाती है, फिर आप अगर ओपनिंग में आप उनको लेकर आते हो तो फिर आपके ओपनर्स फ़खर और इमाम दे गोना गेट फेस्ड आउट, जबकि वो वही भी बात है ना, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली, या इट इज़ वर्थ टू टेक अ रिस्क, लेकिन फिर आपको पता भी नहीं कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे नए वाले लड़के। और बॉलिंग फास्ट बॉलिंग हमारी सेट है, नसीम शाह, शाहीन शाह, दे आर डूइंग राव, एब्सोल्युटली फाइन, और इंशाल्लाह वो आगे जाके और भी अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस देंगे। तो मुझे लगता है इस वक्त हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर्स की जो कमी है वो उसको हमें कवर करना चाहिए, और मे बी a new batsman for number 4, number 5, लेकिन फिर वही बात है, रिजवान इज ऑल्सो डूइंग फाइन एट नंबर 4, या तो फिर नंबर 5 इफ्तिखार है। या वो या ऑफिशियली 30 इयर्स का है, लेकिन कितनी देर चलेगा हमें नहीं पता। तो वही तो मैं भी सोच रहा था कि अभी जिस तरह फखर आई थिंक इज व्हाट 30 समथिंग 30 प्लस, Rizwan as well as I think 30 plus, if I might be wrong, but team is quite young, लेकिन इसमें भी you have 2 3 players at least who you have to phase out by the time next World Cup comes. या तो तो इवन बाबर भी मुझे लगता है 29 30 का हो गया, तो 29, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में something like ही विल बी अराउंड इन हिज मिड 30s, तो that. टाइम गोस रियली फास्ट। Yeah, 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 exactly. खैर let's hope for the best now. अब जो है अपकमिंग मैचेस में एंड सैटरडे को हमारे लिए तो 6 बजे सुबह स्टार्ट है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है। कोशिश लेट्स करेंगे प्रे उठने के की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उठने की कोशिश करेंगे एंड लेट्स प्रे के बारिश ना हो, बारिश डजंट स्पॉइल
the fun for us. And नहीं, I really hope कि at least जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइट दिखाई है and the way they played with Bangladesh, they continue playing like that as well. So I देखिए don't know उदित if you have भाई, any. आप फाइट बैक करके भी हारो ना तो एक परफॉर्मेंस में प्राइड होता है, तो Exactly. they just need to fight back. That's the least what we fans want to see. और Yeah. बाकी बाकी तो अल्लाह के हाथ में, जो अगर बारिश होती है नो वरीज, वो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके खिलाफ। वो फिर हमारा दिल टूटेगा फिर से और हम जयशाह को गालियाँ देंगे, लेकिन जैसे लास्ट एशिया कप में हमने दिए। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वही बात तो आ जाती बाकी है, या इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल, पाकिस्तान टीम इतनी अनप्रेडिक्टेबल होगी हुई है, आपको पता नहीं होता व्हिच पाकिस्तान इज गोइंग टू टर्न अप। Is it the good Pakistan? Is it the bad Pakistan? Then again, the boys are doing their best. At least that's what we या, hope कि वो कर रहे हैं। या, बाकी एग्ज़ैक्टली। न्यूजीलैंड को नो, इंशाल्लाह हम हराएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। No, I really hope New Zealand को हराएँ and then I guess then it will get more interesting for everyone. या Otherwise तो एग्जैक्टली, फिर और फिर लेट्स होप कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, लेकिन which looks totally impossible, but as you know cricket is a funny game। 53 पे ऑल आउट हो गए हैं, so I don't know, but खैर या हाई as you होप्स said है काफी कुछ भी हो ज्यादा, फिर वो ऑप्टिमिज्म फिर से जाग उठती है। जज्बा जुनून आई थिंक अब मेरे ख्याल से अगर ग्राउंड में डीजे वाला भी ना चलाए ना दिल दिल पाकिस्तान की आदत खुद ही चाहिए कि वो स्पीकर पे और ऊंचा ऊंचा उसको लगा के उसको चाहिए वो खुद गाने लग जाए। फिर जैसे वो जो हमारा इनसाइड जोक है, मिलती रहे ये रोशनी, वो बढ़ती रहेगी फिर। exactly, exactly, exactly. No, hopefully, really hope कि no पाकिस्तान does well. क्योंकि अभी भी आई थिंक जो हमारा दोस्त है जबरान भाईजान, वो अभी भी कहते हैं कि पहले इसके साथ तो जीत लो, उसके साथ तो जीत लो, एंड आई गेस वी टेंड टू गेट कैरिड अवे जैसे ही पाकिस्तान स्टार्ट प्लेइंग वेल। वो ऐसे ही होता है, लेकिन कल भी जब आपको पता है जब न्यूजीलैंड हारा है तो कितनी हमें ऑप्टिमिज्म, हम लोग इतने ज्यादा खुश थे, इतने ज्यादा खुश थे, इट वाज लाइक अनदर लाइफ लाइन फॉर अस। तो वो जज्बा जुनून फिर से वापस आ जाता है, फिर आप सोचते हो नहीं यार ऐसे नहीं करना, लेकिन वो फिर आप बाज नहीं आते उस बात से। तो वो वही बात आ जाती है कि यू नेवर नो, और शायद यही या यूनिकनेस है पाकिस्तान क्रिकेट की कि यू नेवर नो कि व्हाट्स गोना हैपन, इवन दो कि हम लोग एज फैंस हम चाहते हैं स्टेबिलिटी आए, लेकिन यही फिर पाकिस्तान के बारे में भी यही बात आती है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी क्रिकेट टीम के अंदर भी नहीं है। क्रिकेट बोर्ड तक में नहीं है, so खैर कोई वही नहीं, ना। but I guess we'll discuss in another podcast इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे एंड लाइक जो भी सारे मसले चल रहे हैं उस पे। बट खैर, थैंक्स फॉर टुडे टेकिंग द नो टाइम आउट वरीज ब्रो। अगेन, और was again very engaging, fruitful discussion, and hopefully एग्जैक्टली। अभी जिस तरह हैप्पी नोट पे ये सेकंड पॉडकास्ट हुआ है, आई थिंक थर्ड वाला भी हो इंशाल्लाह हैप्पी नोट पे ही होगा जब सेमीफाइनल्स में। इंशाल्लाह, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा या नहीं होगा, या फिर हम फाइनल में मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू यार मिस, No टेक worries. केयर। Bye. Take care. Have a nice day, all. Thank you guys, and yeah, look out for the next podcast as well whenever that is gonna come. Till then, keep supporting Pakistan, and हम दोनों को भी दुआ में याद रखें। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।